Now there is a one term called cyber security, and there is another term related information security. So the term cyber security and information security are often used interchangeably, as they are both responsible for securing and protecting the computer system from threat and information breaches. Often, cybersecurity and information security are also so closely linked that they may seem synonym, and unfortunately, they use synonymously. If you talk about data security, it is all about securing the data from malicious user and threat. Now, another question is that what is the difference between data and the information? So, one point is that not every data can be an information. Data can be informed. It is interpreted in a context and giving meaning. अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच में, तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये मान लीजिए मैं आपको एक या हम आपको एक असाइनमेंट देते हैं आपकी क्लास में। देखिए, आपकी एक असाइनमेंट दिया, एग्जांपल से मैं आपको कंसीडर करता हूँ। मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया और उस असाइनमेंट के अंदर मान लीजिए ये एक असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, ठीक। उसके बाद असाइनमेंट दिया, क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? क्लास के अंदर मान लेते हैं एक सिनेरियो के अंदर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। इस क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं। क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं। अब वो इस असाइनमेंट को बनाने की उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो वो कैसे इस असाइनमेंट बनाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 20 के 20 बच्चे एक साथ असाइनमेंट बनाते हैं, नहीं। कुछ बच्चे अच्छे हैं, वो थोड़ा टाइमली असाइनमेंट बना लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट असाइनमेंट बना लेते हैं। अब मान लीजिए क्लास में 20 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि असाइनमेंट बहुत ही जल्दी बनाते हैं। वो असाइनमेंट बनाने के लिए इंटरनेट, बुक्स, नोट्स या कोई रिसर्च पेपर, इन सभी मटेरियल की मदद लेते हैं। अब क्योंकि इन सारी चीजों की मदद ले रहे हैं, तो ये सारा मटेरियल, ये सारी बुक्स, नोट्स उस स्टूडेंट के लिए एक डाटा है। गेटिंग पॉइंट, उसने इन सारी बुकों को पढ़ा, कंसर्न मटेरियल को पढ़ा और उसके बेस पे उन्होंने असाइनमेंट तैयार किया। मान लीजिए असाइनमेंट 40 पेज का तैयार किया, तो अब स्टूडेंट, उन 3 स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप देखिएगा कि वो 3 स्टूडेंट जिन्होंने वो असाइनमेंट बनाया 40 पेजेस का, उनके लिए डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। उनके लिए डाटा है वो सारा मटेरियल जहां से उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर करी, यानी डाटा हुआ वो बुक डाटा हो गया उसके लिए, वो सारा रॉ मटेरियल। इंटरनेट उनके लिए वन रिसोर्स जो हो गया, जो डाटा के, जहाँ वो वेबसाइट जहाँ से पढ़ी वो उनके लिए डाटा है। वेबसाइट्स में 4 पेज पढ़े और उन 4 पेजों में से 1 पेज का उन्होंने नोट बनाया, तो 4 पेज उनके लिए डाटा हुआ। और वो 1 पेज जो उनको समझ आया, मोर रिलेवेंट है, वो हो गया उनके लिए इंफॉर्मेशन। अब ये इस तरीके से दोनों पॉइंट हुए कि डाटा और इंफॉर्मेशन उन 3 बच्चों के लिए। मान लीजिए वही असाइनमेंट 2 बच्चों ने उनसे मांग लिया या कुछ और बच्चों ने उनसे मांग लिया। अब असाइनमेंट उन बच्चों से मांग लिया तो ऑब्वियस सी बात है वो बच्चे उस असाइनमेंट को, उस 40 पेज के असाइनमेंट से कॉपी करेंगे। जब वो उस असाइनमेंट को 40 पेज के असाइनमेंट से कॉपी करेंगे तो वो 40 पेज नहीं लिखेंगे, ये एक ऑब्वियस सी टेंडेंसी है। वो उसमें से भी कुछ प्लस माइनस करेंगे, प्लस तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, और वो 40 पेज के असाइनमेंट को कन्वर्ट करते हैं 20 पेज असाइनमेंट्स में। तो जब वो 20 पेज असाइनमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो उनके लिए डाटा क्या हो गया?
उन बच्चों के लिए वो 40 पेज का असाइनमेंट एक डाटा है, जबकि 20 पेज का असाइनमेंट एक इंफॉर्मेशन है. दिस इज द मेन की पॉइंट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, जो अभी आपको मैंने प्रॉपरली बताई. So now the point is, what is the cyber security and information security? So in a cyber security, it is the practice of protecting the data from outside the resource, on the internet. While in the information security, it is all about the protecting information from unauthorized user access and data modification or removal in order to provide confidentiality, integrity and availability. चाहे वो यूजर इनसाइड हो या आउटसाइड हो, साइबर सिक्योरिटी जनरली इस तरीके से ट्रीट करती है कि जो भी आपका सिस्टम है उसके ऊपर बाहर से अटैक होने वाला है. It is about the ability to protect the user use of cyberspace from cyber attacks. It deals with the protection of data from any any kind of threat could be handled in the information security, while the cyber security says it would handle only the attack would come from the cyberspace. That means the things which are connected to internet. When the things are connected to internet, there is one kind of cyberspace is formed. If you remember, in the today's world, there is a different kind of, for example, Avenger is a movie which come into our uh, and come very popular, but there is a one kind of space that is formed by that movie. For example, different movie character comes into the picture for that. So this is one kind of cyberspace related thing that is captured and handled there. Then there is another point called cyber security to protect anything in the cyber realm. While when we handle in the information security, it is the information irrespective of the realm. And the main concern between this, the cyber security always deal with the danger against the cyber space only. So in the information security, we focus more on the data. As I already given one example where I told you, look, this is the data and this is the information. So in the information security, that sensitive information is more important for us. Okay. Now another point is that cybersecurity professional with cybersecurity deal with advanced persistent threat, while information security professional is the foundation of data security, and security professional associated with it prioritize resource first before dealing with the threat. Another point is we deal with the threat that may or may not exist in the cyber criminal, such as protecting your social media account, personal information, etc. While it deal with the information asset and integrity, confidentiality, and availability. If you remember, these are the terms we already discussed in the starting of our lecture, and they are called CIA. C for confidentiality, I for integrity, and A for availability. Now, this is the picture you can observe. There is a digital information, analog information, plus ICT, things that are vulnerable through ICT information. Then this is the cyber security, things that are vulnerable to ICT, digital information, other things that are information and along information. This is the one picture which show one of the difference between information security and cyber security.